Good morning, students. Today I am going to teach you a very important lesson of grammar. Articles. In articles, we will study about the use of a, an, and the. Okay? The use of a, an, and the. So let's start with a. What is the use of a? Let's see what is written here. A is used before a word that starts with a consonant. What I have written? A is used before a word that starts with a consonant. Now, what is consonant? For knowing it, you have to remember, can you tell me how many letters are in alphabet? Yes, 26 letters. There are 26 letters in alphabet from A to Z. Now we were talking about consonant. See, consonant, the letter of consonants I have written here. There are 21 letters in consonant. They are B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Yes, these are 21 consonants. Now come to the definition. A is used before a word. Means the word starting with a consonant letter, we use A before that. Once again, the word starting with a consonant letter you have seen here. The word starting with a consonant letter, we use A before that. Is it clear? Now example I have shown you here. See, boy, table, pencil, man. See, what is the starting letter of these words? B. B is a consonant. Table, T. T is a consonant. Pencil, P. P is a consonant. Man, M is consonant. So, before these words, what I have used here? A. I have written a boy, a table, a pencil, a man. Okay? So, you understood where we use A? A, we use the word which is starting with a consonant. Clear? Now, the use of N. N is used before a word that starts with a vowel. अब आपने consonant पढ़ा, there are 26 letters. Out of 21 letters are consonants. Then how many remain? 5 letters. Those 5 letters, see, those 5 letters are vowels. What are they? A, E, I, O, U. So come to the definition of this. An is used before a word that starts with a vowel. And we will use the word which is starting with a vowel later, and the vowel letters are given here. A, E, I, O, U. Let's see the example. Orange, umbrella, egg, apple, ink pot. See, these all words are starting with a vowel letter. That's why we have used before these words an. Okay, clear? Okay, next. Now children, I have some star mark points. Okay, and these are very important. जितने भी स्टार मार्क आपके यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, नोट्स दिए हैं, they are very important. So you have to go through it again and again. So let's start. There are some words that begin with a vowel, but they can have consonant sound. ये तो एक्सेप्शनल केस है. They are not following any rules. Means the word they are starting with a vowel. Vowel से start हो रहे हैं. Vowel means A, E, I, O, U. The words are starting with a vowel, but they can have consonant sound. But they are giving a consonant sound. In such cases, we use a before the word. The word is starting with a vowel, but they are having a consonant sound. So, we will use a before those words. Okay? See example, a European. European is starting with E, but the sound of European, okay, E, European भी हम लोग नहीं बोल रहे इसको, European. The sound of E is a vowel here, but it produces the sound of yo.
European, right? European, which is a consonant. It is giving a consonant sound starting with a vowel but giving consonant sound. So we will use A before it. So this is very important for you. वॉवल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे ए. तो साउंड टू नो द साउंड ऑफ अ वर्ड द प्रोनाउंसिएशन जब उसको प्रोनाउंस करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द साउंड ऑफ that word ki it is starting with a vowel sound or is it starting with a consonant sound. Then only you can use the right article before them. Okay, see another example. A university. U is a vowel. U is a vowel, right? Yes, U is a vowel but it produces the sound of U. University. यूनिवर्सिटी नहीं है. अगर हम लोग यू का ही प्रोनाउंसिएशन करते तो हम लोग इसको पढ़ते यूनिवर्सिटी, बट ये यूनिवर्सिटी नहीं है, यह है यूनिवर्सिटी. सो द साउंड दिस वर्ड प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ a consonant u, university. So before this word we are using a. Next example, a one man show. See the word किसके आगे ए लगा हुआ है, वन. O-N-E, one. This is starting with O. This is starting with a vowel letter, but the sound is wa, W-A. See, I have written here. O is a vowel, but it produces the sound of wa, W-A, wa, and W-A is a consonant. It is giving a consonant sound. So, a one man show. Okay. बिफोर वन वी विल यूज़ बिकॉज वन को हम लोग ओन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग इसको वन पढ़ रहे हैं एंड विच इज़ प्रोड्यूसिंग अ कॉन्सोनेंट साउंड. दैट्स वाई वी आर यूजिंग ए. ओके, नाउ नेक्स्ट. There are some words that begin with a consonant but they have a vowel sound. In such cases we use an before the word. Yes, there are some words, कुछ ऐसे भी words होते हैं which are they are beginning with a consonant. Consonant 21 letter आपने पढ़ा ना, ये कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं बट दे आर प्रोड्यूसिंग अ वॉवल साउंड. सो इन सच केसेस वी विल यूज़ एन बिफोर द वर्ड. तो साउंड का जानना बहुत ज़रूरी है. वॉवल लेटर से स्टार्ट हो रहा है लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो ए लगाएंगे. कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है बट वॉवल साउंड दे रहा है तो हम लोग एन लगाएंगे. सी एग्जाम्पल, एन आर. एच इज़ अ कॉन्सोनेंट बट it produces the sound of a. and R. हावर इसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग हावर HOUR हावर नहीं पढ़ते इसको R. So this is giving a sound of vowel. That's why we are using an R. Okay, H is silent here. Next example, an honest man. See again, H it is starting with H but we are not pronouncing it honest. We are pronouncing it honest. So an honest man. H is a consonant but it produces the sound of O which is a vowel. So we are using an before this. Okay. One more star point. A and an are used before the name of one person, place, animal or thing. ये बहुत ही important चीज़ है. We are using a n but you have to remember always that a and n is used with always a singular noun जो one name of person होता है, one place होता है, one animal होता है, one thing, सिर्फ उसके आगे a और n लगाते हैं, not before the plural noun. Okay, clear? Turn the page. I am showing you some example. These all are in singular form. Okay, a man, an orange, a kite, a boat, an umbrella, an ink pot, an arrow, a monkey, a garden, an egg. तो आप देख लीजिए ये सारे सिंगुलर फॉर्म में है और इनके साउंड के अकॉर्डिंग वी हैव यूज्ड ए और एन. ओके, नाउ अगेन वन स्टार पॉइंट. A and are used before common names, general things. Common noun पढ़ा है ना आपने. Common name, the word, the noun which denotes the whole class. Sorry,
द विच इज़, हाँ, विच टेल्स अबाउट द होल क्लास. जो जैसे समझ लो डॉग. डॉग क्या हुआ? डॉग वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर डॉग. डॉग मतलब वी हैव टेकन दिस वर्ड इन एज अ कॉमन लिए हम लोग कि एनी डॉग कैन बी. बॉय कोई भी लड़का, गर्ल कोई भी लड़की, स्कूल कोई भी स्कूल. बट व्हेन वी आर गिविंग अ स्पेशल नेम टू दिस वर्ड्स, it becomes proper noun. It's become special. It becomes specific. Okay, so a and an are used before common names or general things. See example, this is a dog. I have not given any name, particular name to this dog. I am talking about a general dog, so that's why we are using before it a. C has an orange, any orange. Okay, so an orange. I want a toy, any toy. I have not given any particular name to this toy. This is general, this is common, so that's why we are using here a according to its sound. Buy me an ice cream. Ice cream is in general word, is a general word. Why? Because if it is not a particular name, अगर हम यहाँ पे लिख देते स्ट्रॉबेरी या वनीला या कुछ भी और अलग से नाम देते अमूल आइसक्रीम, तो वहाँ पे स्पेशल नेम हो जाता. बट हियर ओनली आइसक्रीम, इट्स अ जनरल वर्ड, सो वी आर यूजिंग बिफोर इट अकॉर्डिंग टू इट्स साउंड एन. So a and an we are using with common names, common nouns or general things. Okay. Now the use of the. The is used when we are talking about a particular person or thing, or the thing that are only one of their kind. The we are using with when we are talking about जब किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करते हैं, जब उसी वो पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है ना, स्पेशल है, जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो दैट देयर वी यूज द बिफोर दैट noun word. Okay, and one more thing, or the things that are only one in their kind. जो दुनिया में सिर्फ एक ही है, वो अपने काइंड के सिर्फ वन है. सी एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन, द सन, द मून, द अर्थ, द गंगा, ये सब एक ही है और स्पेशल नेम्स है. द बॉय इज सिटिंग. अब बोलोगी बॉय, बॉय तो कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसी बॉय के बारे में बात कर रहे हैं जो बैठा हुआ है. तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. सो वी आर टॉकिंग अबाउट हियर अ पर्टिकुलर बॉय who is sitting over there. Okay, so we are using the before this boy. There is a ball under the table. We are not talking about any common table. We are talking about that table where the ball is. Under that table the ball is. हम लोग उसी टेबल की बात कर रहे हैं जिसके नीचे बॉल है. So it becomes a particular thing. तो इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे? द टेबल, जो स्पेशलाइज हम लोग कर रहे हैं. उसी टेबल के नीचे बिल्ली छुपी है, यानी कि कोई एक स्पेशल टेबल है जिसके नीचे बिल्ली छुपी है. राइट. यूज ऑफ द बिफोर कॉमन नाउन दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट द होल क्लास. कॉमन नाउन्स ही होते हैं बट वो होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. देन वी आर यूजिंग द बिफोर दैट. सी एग्जाम्पल, द लायन इज अ फियर्स एनिमल. द लायन का मतलब क्या हुआ? लायन इज अ कॉमन नेम, बट यहाँ पे लायन हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरे कास्ट को, पूरे काइंड को डिनोट कर रहा है. द लायन इज अ फियर्स एनिमल. लायन जितने भी होते हैं ऑल आर फियर्स. ओके. The lotus is our national flower. We are not talking about one lotus. We are talking about the whole kind, the whole kind of the lotus. तो lotus जितने भी है दुनिया में, उसको एक नाम हम लोग दिए, उसको एक पूरा होल क्लास को डिनोट कर रहा है. That's why we are using here. The lotus is our national flower. Before the names of all rivers, sea, oceans, waterfalls and mountain ranges, इन सब के नाम के आगे हम लोग द लगाते हैं. Before the names of river, the Ganga, the Red Sea, the Pacific Ocean, the Niagara Falls, the Mount Everest, ये सारे स्पेशल नेम हैं. तो स्पेशल नेम्स के आगे हम लोग क्या लगाते हैं? द. Before the names of newspaper, holy books, important buildings, द नेम्स ऑफ, मैं क्या बोल रही हूँ, उनके नाम के आगे न्यूज़पेपर, द नेम ऑफ न्यूज़पेपर लाइक द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया. तो ये क्या हुए आपके? द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर. होली बुक्स, होली बुक्स क्या हुए? जैसे रामायण हो गया, भागवत गीता हो गया, बाइबल, कुरान, ये हमारे होली बुक्स है. सो बिफोर दिस नेम्स वी आर यूजिंग द. द बाइबल.
बिफोर इम्पॉर्टेंट, द नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स. इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स मतलब क्या हुआ, मीन्स लाइक कहने का मतलब जैसे कि आपका कोई भी बिल्डिंग आप जहाँ रहते हो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग. सो जब आप किसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के बारे में बात करें, जैसे कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ओके, पार्लियामेंट हो गया. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग वी यूज द बिफोर दैट. नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन सबको पता है, देयर आर मेन 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. सो बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन वी यूज द. सो आई होप चिल्ड्रन यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेल. सो इसको आप बार बार पढ़ोगे देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू. थैंक यू.